In a big boost to Assam's industrial sector, coal mining operations at Tikok colliery in Margherita subdivision of eastern Assam's Tinsukia district are all set to resume from today. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma along with Union Coal Minister Prahlad Joshi will be inaugurating the resumption of coal mining operations at the Tikok colliery in Margherita at around 2 p.m. today. Coal India Limited, which has its operations under the Northeastern Coalfields or NECF, has its mines in Margherita subdivision of Tinsukia district. It may be mentioned that coal mining has been the economic backbone of Margherita ever since the days of British rule, when coal mining operations were first initiated in the area under the erstwhile Assam Railway and Trading Company in 1973. However, all operations of the company were halted in June 2020 due to various technical issues and environmental factors. Now, after having rectified several of the technical problems, mining operations are set to resume from today. It may be noted that resumption of coal operations will also come as a big boost for Assam's tea sector, as coal has been a major feedstock for the hundreds of tea gardens in Assam as well as many other industrial units. Yes, viewers, the big development to start us off here at this point in time. In a big boost to Assam's industrial sector, coal mining operations at Tikok colliery in Margherita subdivision of eastern Assam's Tinsukia district are all set to resume from today. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma along with Union Coal Minister Prahlad Joshi will be inaugurating the resumption of coal mining operations at the Tikok colliery in Margherita at around 2 p.m. today. Coal India Limited, which has its operations under the Northeastern Coalfields or NECF, has its mines in Margherita subdivision of Tinsukia district. It may be mentioned that coal mining has been the economic backbone of Margherita ever since the days of British rule, when coal mining operations were first initiated in the area under the erstwhile Assam Railway and Trading Company in 1973. However, all operations of the company were halted in June 2020 due to various technical issues and environmental factors. Now, after having rectified several of the technical problems, mining operations are set to resume from today. It may be noted here that resumption of coal operations will also come as a big boost to Assam's tea garden sector, as coal has been a major feedstock for the hundreds of tea gardens in Assam as well as many other industrial units. नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड में जो अभी खुलने जा रहा है, इसका लिए पहले हम सेंट्रल जो मिनिस्टर प्रहलाद जोशी साहब को हम लोग हार्दिक स्वागत करते हैं। उनके साथ साथ माननीय यहाँ का चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा जी को हम लोग हार्दिक स्वागत करते हूँ। नॉर्थ कोलफील्ड मार्गरेटा का साथ साथ ये बृहत्तर अंचल का भी ये लाइफ प्लान है। अगर ये लाइफ प्लान नहीं रहेंगे तो मार्गरेटा का जितना आप जागुन से पकड़िए पावई तक आपका इकोनॉमिकली पूरा डाउन हो जाएंगे। इसीलिए नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड खुलना बहुत जरूरी था। और हम लोग और एक गुजारिश करेंगे जे नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड अभी जो टिकोक ईस्ट खुले हैं, इसका साथ साथ टिकोक वेस्ट भी खुलना पड़ेगा और टिराप को भी खुलने का लिए उन लोगों ने अगर काम करेंगे तो नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड जिंदा रहेंगे, क्योंकि खाली टिकोक ईस्ट रहने से नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड सर्वाइव नहीं करेंगे। हम लोग का यहाँ से बहुत हम लोग का साथियों को ट्रांसफर दिया गया था। वो जो ट्रांसफर दिया गया था वो साथियों को फिर से यहाँ में लाया जाए, यहाँ में नौकरी बहाल किया जाए उन लोग को, ये हम लोग का डिमांड रहेंगे। All right, and to bring us all the latest updates, I'm being joined now live by my colleague Ripunjoy Das from Margherita. Ripunjoy, indeed a big boost for Assam's industrial sector set to take place today as coal mining operations at the Tikok colliery are set to resume from today onwards. What are the latest updates you're receiving at this point in time? Ripunjoy, over to you. Hello. Yes, Ronak, indeed it's a very important and red letter day, I would like to say, for Coal India Limited, that operations are resuming. Yes, Ripunjoy, we can hear you. Please continue. Yes, Ronak, I was just saying that it is a very important day for the people in Margherita, not only those who are associated with
Coal India Limited or Northeastern Coalfields, because resumption of coal operations means that resumption of the entire revival of the entire economic activities in the entire subdivision. And this is quite important because Union Coal Minister is arriving here, and along with his Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa, who will be here at this place in Tikok coalfields, where right now we are here, and will formally resume the operations here. We have some local people here who would like to say, would like to interact with them. क्या हो रहा है यहाँ, आपको क्या लगता है इसके जरिए जो आज रिजम्पशन हो रहा है, इसके जरिए मार्गेरिटा का जो इकोनॉमी है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले तो मैं हमारे जो मार्गरेटा के जो विधायक है भास्कर शर्मा जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उनका बहुत कोशिश के बाद आज हम लोगों ने जो मार्गरेटा में जो आज ये कोल माइनिंग जो ओपनिंग का जो सिद्धांत लिया गया, और जो हमारा जो आदरणीय जो प्रहलाद जोशी जी भी सेंट्रल कोल मिनिस्टर, उन्होंने भी आज यहाँ आके ये जो ओपनिंग करेंगे, तो इसका लिए मैं आभारी हूँ हेमंत बिस्वा शर्मा जी का। इनका भी काफ़ी हाथ रहा है इसमें, ये माइनिंग खुल के मार्गरेटा का जितना भी हम लोगों का जो पब्लिक है, हर पब्लिक को जिस तरह से मार्गरेटा आज इस कॉल इंडिया का ऊपर में ही बेस करता है, तो कॉल इंडिया का ऊपर में बेस करने का कारण आज कम से कम 2 साल से ऊपर हो गया ये माइनिंग जो बंद है। इसका चलते मार्गरेटा का जो इकोनॉमिक है बहुत आर्थिक हालत से माने बहुत खराब है, नाजुक हालत है। हर दुकानदार का हालत खराब है, इनकम सोर्स का कोई दूसरा जरिया नहीं है। आज माने ये मार्गरेटा वासी हर राइस के लिए, हर पब्लिक के लिए माने एक बहुत खुशी का दिन है। आज नॉट ओनली लिडू, नॉट ओनली टिकोक, पूरा एंटायर मार्गरेटा तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट तक की भी इसका इकोनॉमी का प्रभाव पड़ता है। इस कॉल इंडिया से काफी माने लेन देन होता है, जिसका चलते आज हम लोगों ने देखा है कि हर पब्लिक के अंदर में एक खुशी का माहौल देखा जा रहा है। हर आदमी माने खुशी से माने झूम रहा है, लोग माने सब कोई आज में माने इस सेलिब्रेशन में। दिस कोल ऑपरेशन हैज बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 150 years since the days of the Britishers. 1882 was the year when ART company has started the operation here. So from then till now, how do you like to assess the situation? What kind of improvement changes are there? देखिए, जो जब तक ये ब्रिटिश का जमाना में खुला था, ये सबको मालूम है। आज 150 साल का करीब 150 साल हो चुका है कॉल इंडिया का। तो ये पहले ART कंपनी का नाम से जाना जाता था, लेकिन जब से कॉल इंडिया में कन्वर्ट हुआ, कॉल इंडिया में कन्वर्ट होने के बाद में लाहे जो डेवलप हुआ, इनका यहाँ का कोयला जो है आसाम का कोयला रानी बोल के जाना जाता है। मार्गरेटा का कोयला बहुत उन्नत किस्म का माने कोयला यहाँ से प्रोडक्शन होता है, और इसी कोयला से माने इंटरनेशनल में भी इसका एक्सपोर्ट होता है। तो इससे काफी पैसा हम लोगों का यहाँ में आता है। इसका चलते कॉल इंडिया का जितना भी एम्प्लॉई जो निबनुआ जो है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है, आज कॉल इंडिया का पोजीशन खराब होने के कारण, कॉल इंडिया बंद होने का कारण आज नया से कोई जो लड़का लोग आज जो निबनुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है। काफी माने निबनुआ जो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम तो ज्यादा दिन के दिन माने बढ़ता जा रहा है। तो इसका चलते हम लोगों ने देखा है कि इससे माने सोसाइटी का जो है बहुत खराबे हो रहा है। इसलिए ये कॉल इंडिया का ऊपर में बेस करता है। कॉल इंडिया खुलेगा तो यहाँ काफी अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का जो है अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा। So, Raunak, you have seen that how the economy is totally dependent upon the activities of Coal India Limited here. People are very much enthusiastic today and thankful to the Union Coal Minister as well as Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma for resumption of the operation, because it means that their life will once again have a very better life. In other words, you can say you have just heard the person concerned saying that it has affected the entire economy for the last 2 years, and this is why people are here very much jubilant that the operations are being resumed from today. Raunak. Right. So, Ripunjo, any inputs on at what time the inauguration of the resumption of operations is going to take place? And for the benefit of our viewers, can we get a glimpse of how the preparations for the inauguration are coming along? Ripunjo.
Yes, Ronak, I would like to request my camera person to show the colliery around. These are the areas where the mining takes place in actual sense. And right now we are in the office location area where the everything is controlled. You can see the hills. You can see, if you can zoom in, that some JCB is still continuing its work, and that means that these operations are starting from today. And the formal time, Ronak, is 2:30 p.m. for the Union Minister and the Assam Chief Minister to arrive at this location to formally kickstart the resumption of oil operations. And they will be accompanied by the CMD of Coal India Limited and senior officials from the ministry. So, Ronak, it's definitely a big boost for the economy of the entire region here. And to say that these only one coal mine will produce around 2 lakh metric tons of coal every year, and that will be sold, marketed in the open market through e-tendering and through e-platforms. So that will definitely bring in a lot of business and ancillary business, Ronak. That is quite important. We'll again resume as the operations begin today.